I hope the Awaz is very much clear to all of you. We have done something in terms of the tradeophyte is something we have done. So let's do one thing. Let's go beyond that. So चालू करते हैं हमारा story and let's complete the gymnosperms and also let's solve some questions over there. So tradeophyte हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं. So let's now complete the gymnosperms. So these are some of the questions we have solved. We have understood some of the things over here, right? Now let's wrap up the chapter. So gymnosperm से हमारी हम यहाँ पे story start करेंगे. So when you discuss about the gymnosperm, so let's see some of the basic traits of the gymnosperms. Discuss about my gymnosperms. So one of the basic traits are going to be like you have around 900 species of gymnosperm throughout the world. You have 900 species of gymnosperms. ओके सो पूरे वर्ल्ड में आपको इतनी स्पीशीज आपको मिलती है जिम्नोस्पर्म्स की यहाँ पे. They are my true land plants. You are going to call them as they are like true land plants in the real sense. Okay, these are the group of plants which do not depend on water for my fertilization. इनको पानी की जरूरत नहीं होती फर्टिलाइजेशन कराने के लिए. So that's why you call them like in a real sense you can call them as a true land plants. Obviously they will have my root, stem and leaves. So you'll have a presence of your roots, stem and leaves. ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी. दे आर ऑल थिंग्स विल बी वेल डिफाइंड तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट. यू विल हैव द वास्कुलर टिश्यू. आपको यहाँ पे वास्कुलर टिश्यू मिल जाएगा. सो द वास्कुलर टिश्यू विल बी सीन. अब वास्कुलर टिश्यू में चाहूंगा कि आप एक चीज यहाँ पे याद रखें. आई वांट टू रिमेंबर वन थिंग इन दिस वास्कुलर टिश्यू. यू हैव द xylem and phloem. तो xylem and phloem आपको यहाँ पे दिख जाता है. यू कैन क्लियरली सी द xylem and phloem in this. But xylem में आपको याद रखना है that when you talk about xylem, so you'll have xylem as well and you'll also have a phloem as well. आपको याद यहाँ पे रखना है कि xylem के अंदर you will get to see a presence of my tracheids. Will be seen in them. Vessels आपको यहाँ पे नहीं दिखते. Vessels आपको यहाँ पे दिखेंगे. You will see the tracheids over here. ठीक है. So you'll have the tracheids over there. Phloem के अंदर you'll have the sieve cells, not sieve tubes. यहाँ पे आपको sieve cells मिलेंगे. You'll have sieve cells. This is the one of the thing we have to know that you generally get to see vessels only in the angiosperms. Gymnosperm के अंदर आपको vessels नहीं मिलती. You get the tracheids. अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रैकेट या वेसल में से कौन सा ज्यादा बेटर होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी माय वेसल्स. ऑलवेज vessels are much more better in terms of water conduction compared to my your tracheids. But you should know that tracheids are something which will become a part of my, which will be seen in my xylem के अंदर. Okay, then when you talk about gymnosperm, you should know that main plant body is going to be sporophytic. मेन प्लांट बॉडी जो आपकी यहाँ पे आती है दैट इज गोइंग टू बी योर स्पोरोफाइटिक. तो अगर आपके सामने कोई जिम्नोस्पर्म आ रहा है देन दैट विल हैव अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी. सो इट विल बी हैविंग अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ओवर देयर, राइट. These are the plants which where you will find naked seeds are produced. So naked seeds are seen. So naked seeds are formed. जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि आपके नेकेड सीड्स आपका बन के मैं आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट, दैट यू विल गेट टू सी कि आपके सीड तो आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके, बट द सीड्स विल बी हैविंग लाइक नो फ्रूट फॉर्मेशन विल बी सीन इन देम. सो ओव्यूल आपको मिलेगा यहाँ पे बट यू वोंट हैव अ ओवरी. सो यू शुड नो दैट द ओव्यूल विल टर्न इनटू अ फ्रूट, ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड, ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड ओवर हियर, बट देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन. आपको फ्रूट फॉर्मेशन आपका पे नहीं मिलने वाला, राइट. तो प्लीज याद ये काफी प्रिसाइसली. अच्छा बेटा, ओ ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है. थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो. या जस्ट वेट अ मिनट.
अब ठीक दिख रही है आप हेलो लोगों को मेरे यहाँ पे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी नवीन सर बताइए। या गुड मॉर्निंग बच्चों। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आपका जो जी मेंस का रजिस्ट्रेशन है वो 22 तारीख लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी अगर किसी का रह गया हो तो वो कर ले। 22 तारीख लास्ट डेट है जी मेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए। थैंक यू। ऑलराइट सो पीपल लेट्स हैव अ लुक एट दिस अगेन। सो जब हम जिम्नोस्पर्म्स की यहाँ पे हम बात करते हैं, मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, उनकी तरफ आप ध्यान देना। आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको 900 जितनी स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल जाती है जिम्नोस्पर्म्स की। इनको मैं सही मायनों में बोलूंगा एज ट्रू लैंड प्लांट्स। तो ये और एक सही मायनों में लाइक ट्रू लैंड प्लांट्स हम इन्हें यहाँ पे इसलिए कहते हैं बिकॉज इनको पानी की जरूरत नहीं होती फॉर माई फर्टिलाइजेशन। सो दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज ट्रू लैंड प्लांट्स इन द रियल सेंस। आपको रूट स्टेम और लीव्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो विल गेट टू सी अ ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। दे विल हैव द वास्कुलर टिश्यू। जाइलम फ्लोएम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यू विल फाइंड वास्कुलर टिश्यू वेल डिफाइन आपको दिखता है यहाँ पे। आपको याद रखना है यहाँ पे है आई एम यूजिंग द व्हाइट कलर लुधियाना, आई एम यूजिंग द व्हाइट कलर, सो आई होप दैट इज समथिंग विजिबल। I've just ensured that I will always use the white color now. So I hope that works for you. ठीक है, तो वास्कुलर टिश्यू में याद रखना विल हैव अ जाइलम एंड फ्लोएम, एंड जाइलम विल बी हैविंग द ट्रैकेट्स एंड फ्लोएम विल बी हैविंग द सीव सेल्स। सो ये बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जाइलम जो आपको यहाँ पे होता है इसके अंदर आपको सिर्फ ट्रैकेट्स मिलेंगे, यू वोंट हैव द वेसल्स ओवर हियर। वेसल्स आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके एंजियोस्पर्म के अंदर। सो जाइलम में आपने ये पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस के अंदर, मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा, यू हैव ट्रैकेट्स एंड द वेसल्स। तो ट्रैकेट्स यू फाइंड इन द जिम्नोस्पर्म्स, वेसल्स यू फाइंड इन द एंजियोस्पर्म्स। फ्लोएम के अंदर भी आपको याद रखना है यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सीव सेल्स, जिनका काम होता है शुगर को ट्रांसपोर्ट करना, राइट। मेन प्लांट बॉडी जो आपकी यहाँ पे होती है दैट्स अ स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे स्पोरोफाइटिक हो जाएगी एंड नेकेड सीड्स आर बीन फॉर्म। यहाँ पे आपको नेकेड सीड बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक एंड विल फाइंड द नेकेड सीड्स आर बीन फॉर्मड ओवर हियर। व्हेन आई से नेकेड सीड्स आर फॉर्म दैट मींस आपका जो ओव्यूल यहाँ पे होगा प्लांट के अंदर दैट विल कन्वर्ट इनटू अ सीड एंड देयर वोंट बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट, राइट। सो यू शुड नो दैट देयर विल बी नो फ्रूट फॉर्मेशन। सो कोई फ्रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिलेगा। सो देयर विल बी नो फ्रूट फॉर्मेशन व्हिच विल बी हैपनिंग इन देयर। सो दैट इज दीज आर द ट्रेट्स यू हैव टू नो। ये कुछ ट्रेट्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख नहीं देते, लेकिन आई होप अब आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक और बात याद रखना है दैट दीज ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर लाइक दे डोंट हैव नो फ्रूट फॉर्मेशन, दे हैव नो फ्लावरिंग हैपनिंग इन देम। सो फ्लावरिंग भी आपके पे नहीं हो रही होती, ये भी आपको करना है। फ्लावरिंग इज नॉट समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन देम। यू शुड नो दैट बट पॉलिनेशन विल बी हैपनिंग। पॉलिनेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। सो यू विल फाइंड पॉलिनेशन आपका यहाँ पे होता है बट बिकॉज ऑफ द अबायोटिक फैक्टर। So pollination will be happening because of your wind. So whatever the pollination will be happening here will be happening because of your wind. So wind की वजह से आपको यहाँ पे pollination हो रहा होता है। इसके वजह से आपको क्या मिलेगा ना that very often you will get to see कि यहाँ पे आपके जो pollen grains होते हैं, the pollen grains you will get to see in them, they are my winged pollen grains. They are my winged pollen grains. So pollen grains जो आपके यहाँ पे देखते हैं we call them as the winged pollen grains. Winged pollen grains का मतलब ये होता है that they will have some kind of shape over there. So pollen grain will have some kind of shape, and because of that some kind of shape, they can actually travel for a longer distance. So you should know that this is what you will find in the gymnosperm. They will have a winged pollen grain ताकि इसके जैसे वो लोग काफी दूर तक travel करके जा सकते हैं along with the wind. Okay. Pollen grain is generally going to have my two male gametes you will find in them. So that's what we have seen that pollen grain are going to have. अगर मैं pollen grain यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, then a pollen grain will always going to be having a presence of my two male gametes. Generally, you will get to see two male gametes will be seen in them. Right? So these are the general traits you will get to see in the plant. ये आपके कुछ general traits है जो आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. Now, one thing you have to understand that जिम्नोस्पर्म के अंदर you have certain groups over here. Like you have let's focus on one of the group. That's my cycas. So cycas is एक example and cycads are the group over there. But let's take example of cycas right now. अगर मैं कुछ example की यहाँ पे बात करता हूँ तो उनमें से दो example आप यहाँ पे याद रख सकते हो. One is going to be the cycas. And one example can be your pinus. So cycas and pinus are the two examples. You can have a look at them. These are like two examples
two common examples जो आपके inside में mention किए हुए, and you can always remember these examples. These are the examples of my plants, which are my Cycas and Pinus. Right now, Pinus belongs to a group of plants or category of gymnosperm called as my conifers. तो आपका जो Pinus यहाँ पे है ना, Pinus belong करता है आपके category के अंदर, and that category is called as my conifers. आप अगर कभी जाते हो हिमाचल घूमने के लिए, हिमाचल, उत्तराखंड, जे.एन.के अगर आप जाते हो तो आपको पाइनस के ट्री आपको काफी इजीली दिख जाते हैं, बल्कि आपको पाइनस के ही ट्री दिखते हैं और कोई ट्री दिखता ही नहीं आपके आसपास. सो दीज आर द प्लांट्स व्हिच आर वेरी कॉमनली सीन इन सम ऑफ द लैंडस्केप. अल्पाइन एरिया में आपको काफी कॉमनली आपको मिल जाता है. साइकस का प्लांट आपको आपके घर के आसपास मिल सकता है, बट पाइनस इज समथिंग यू विल ओनली फाइंड देम, लाइक यू फाइंड देम इन सर्टेन एल्टीट्यूड के अंदर आपको ये देखने को आपको मिलता है. Now, when we discuss a plant like conifers, अगर हम plants की बात करते हैं यहाँ पे, then they will have some traits. इनके अंदर आपको कुछ traits मिलते हैं which you have to remember. So conifer plants will have a trait like, जिसके अंदर आपका example यहाँ पे आएगा, which will have an example like your pinus. They will have a trait like needle-like leaves. So needle-like leaves आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. They will have succulent stomata. Thick cuticle on the leaf. और ये तीनों traits आपको दिख रहे हैं. You have a needle-like leaves, you have a succulent stomata, and you have a thick cuticle on the leaf. Now all these traits actually avoids loss of water. These all traits are actually going to avoid loss of water. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, because you have all the traits in front of you, you can clearly say that they actually help in avoiding the water loss. They actually help in avoiding water loss. So water loss को ये यहाँ पे avoid करता है. Right, this is going to avoid the water loss over here. So basically होता क्या है, when you have a needle-like leaves, you will have a less surface area on the leaves. Succulent stomata आपके यहाँ पे रहेंगे, thick cuticle रहेगा. तो what is happening? You will have a reduced rate of transpiration. Because of all the traits, what you will find happening in this, you will have a reduced rate of transpiration. You will have a reduced rate of transpiration. And because you have a reduced rate of transpiration, so because of that, what is happening? The water loss has been avoided. So that's the advantage you will get to have. That's the advantage you will get to have when you have this kind of traits over there. So that's something you have to know. Also, you have to know that gymnosperms collectively are being well adapted to survive in a harsh condition. Generally देखा गया कि जिम्नोस्पर्म के अंदर भी आपको ट्रेट मिल जाता है, देखेंगे that they are able to cope up and survive in the harsh condition. में वो survive कर जाता है. So they have these traits which actually help them to survive in the harsh condition. Some of the gymnosperms the roots will have some kind of symbiotic relationship. जैसे पाइनस का हम अभी आगे देखेंगे. Pinus will have a symbiotic relationship with the fungi. So let me just show you over here. ये तो आपका साइकस है. अच्छा, याद रखना, साइकस इज माय डायशियस प्लांट. साइकस जो मेरा यहाँ पे होगा, सॉरी आई हैव जस्ट यूज्ड ऑरेंज कलर, चेंज कर रहा हूँ टू व्हाइट. सो यू हैव अ साइकस प्लांट एंड साइकस प्लांट विल बी हैविंग, इट इज एग्जांपल ऑफ माय डायशियस प्लांट. नाउ व्हेन आई से साइकस इज माय डायशियस प्लांट, दैट मींस व्हाट? द प्लांट will have male and female plant will be separate. ये है मेरे यहाँ पे मेल प्लांट, और ये मेरे यहाँ पे फीमेल प्लांट. सो मेल एंड फीमेल प्लांट आपका यहाँ पे सेपरेट आपका मिल जाएगा. सो दैट्स माय डायशियस प्लांट. सो डायशियस प्लांट में आपको याद रखना है दैट मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट आर गोइंग टू बी सेपरेट ओवर हियर. On the other hand, you have a monoecious plant. इसके साथ साथ you can also have an example of a monoecious plant. So basically, आपका pinus can be example of a monoecious plant. When I say it's a monoecious plant, that means you will have your male and female reproductive organs are in the same plant. So that is why we call them as a monoecious plant. So monoecious, dioecious आपको याद रखना है. इसके example रखना. Basically, cycas is one of the example you have to know, which is my dioecious plant. जहाँ पे male and female plant आपका separate होगा. Pinus के अंदर you will have a male and female organs are to be in the same plant. Right? Achha, now there's one more thing I want to tell you in this. You should remember this thing very carefully. That in gymnosperms, you will never have an independent gametophytic stage.
इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज नॉट सीन इन द जिम्नोस्पर्म, ये बात याद रखना। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, पेंडेंट गैमेटोफाइट इज नॉट सीन। अभी तक हमने देखा था दैट इवन इन योर टेडोफाइटा यू आर एबल टू सी द इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इवन इन ब्राफाइट यू आर एबल टू सी द इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, बट यहाँ पे आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपके गैमेटोफाइट आपको स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर ही आपको मिलेंगे। सो ऐसा कभी भी आपको मिलेगा नहीं दैट यू हैव अ प्लांट जिम्नोस्पर्म व्हिच विल हैव अ गैमेटोफाइट जो अकेला रह रहा है कहीं पे दूर जाके। यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग। सो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज नॉट सीन इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ना ही इसी ग्रुप में आपको मिलता है, ना ही आपको एंजियोस्पर्म में आपको मिलेगा, राइट। सो नाउ यू हैव अ साइकस के बारे में हम यहाँ पे बात करें। साइकस आपको अनब्रांच प्लांट होता है यहाँ पे। साइकस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होती है? साइकस के जो पोलन ग्रेन होता है इट विल हैव द मेल गैमेट्स। That is not an interesting thing. The interesting thing is the male gametes will have a flagella. So male gametes, I won't say flagella, but they will have like they are motile. So that yes, we will have a small flagella will be seen in them. काफी इंटरेस्टिंग बात है कि मेल गैमेट के अंदर आपको फ्लैजेला मिल रहा है, बिकॉज जनरली अगर आपका ट्रू लैंड प्लांट है तो ये फ्लैजेला होने का कोई पर्पस होता नहीं है, बिकॉज पोलन ट्यूब के थ्रू ही आपके जाएगा आपके ओव्यूल तक। बट दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, मेल गैमेट विल बी हैविंग अ फ्लैजेला। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट मेल गैमेट कहाँ मिलेगा, देन आंसर इज माय साइकस। दे आर माय लार्जेस्ट मेल गैमेट्स। सो लार्जेस्ट मेल गैमेट्स आपको साइकस में ही मिलते हैं। सो लार्जेस्ट मेल गैमेट्स विल फाइंड इन द साइकस। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये जो स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है दैट्स माय पोलन ग्रेन बाय द वे, राइट। वन मोर थिंग यू हैव टू नो, साइकस इज आल्सो कॉल्ड एज माय लिविंग फॉसिल। साइकस को मैं इवन बोलता हूं यहाँ पे एज अ living fossil. Now, why do I say cycas as a living fossil? Because it has some traits जो पहले के टाइम से अभी तक आपको मिल रहा है, which hasn't changed. So that is why we call them as a living fossil. Let's see some of the things over here. Gymnosperms are my naked seed वाले plants मेरे यहाँ पे. They are the plants in which the ovule is not enclosed by the ovary wall and remains exposed before the and after the fertilization. So ovary wall आपको यहाँ पे मिलनी नहीं, you only have the ovules that will convert into the seed. Seeds are developed पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड आर नॉट कवर्ड। सीड्स आपके फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं और ये आपके कवर्ड यहाँ पे नहीं होते हैं। दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज, श्रब, सब आपको मिलेंगे आपको इसके अंदर। सिक्विया जो आपको यहाँ पे प्लांट हो गया जिम्नोस्पर्म वाला इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ये आपकी एक टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। इन प्लांट लाइक साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स आर सीन। साइकस के अंदर आपको एक स्पेशलाइज्ड टाइप के आपको रूट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। We call them as a corelloid roots. We call them as a corelloid roots and are associated with the natron fixing cyanobacteria. They are associated with your natron fixing cyanobacteria. The roots are generally taproot. तो आपको एक अलग ही टाइप के रूट्स आपको मिलते हैं साइकस के अंदर। You call them as a corelloid roots and they are known to play important role in my nitrogen fixation. Like these roots will have some bacteria. You call them as cyanobacteria. और साइनोबैक्टीरिया आपके यहाँ पे मदद करता है फॉर माय नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ओके, देन रूट्स इन सम जेनेरा हैव अ फंगल एसोसिएशन इन अ फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। तो ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। लेट मी टेल यू ओवर हियर। फॉर एग्जांपल आप पाइनस को आप यहाँ पे देखना। सो पाइनस के जो रूट्स होते हैं, पाइनस के रूट्स के अंदर विल हैव लाइक अज्यूम दैट दीस आर द रूट्स, ठीक है। रूट्स है पाइनस के, इनके साथ आपका एसोसिएट होगा आपका एक फंगस यहाँ पे। इनका आपका यहाँ पे फंगस यहाँ पे लगा हुआ है। सो देयर इज अ वन फंगस व्हिच इज ग्रोइंग ऑन दिस रूट्स, राइट। सो ये ब्लू वाला जो आपका स्ट्रक्चर आपको बना रहा हूँ आपके यहाँ पे दैट्स अ फंगस। सो दिस इज अ फंगस ओवर हियर। और ये व्हाइट वाला जो रीजन है आपके यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी रूट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके रूट्स के साथ आपके यहाँ पे फंगस आपका एसोसिएट है आपके यहाँ पे। This is what you call as my mycorrhiza. So when you have a fungus associated with the roots over here, this
kind of association is called as my mycorrhiza. इसको बोलेंगे यहाँ पे एज अ mycorrhiza. एंड माइक्रोराइजा जो आपको मिलेगा, इसका काम यहाँ पे क्या होता है. सो आप ये बात सोचना कि अगर आपका फंगस यहाँ पे रूट्स के साथ लगा हुआ है तो इसके फायदा क्या होगा. द एडवांटेज इज गोइंग टू बी दैट दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ये आपका सरफेस एरिया आपके एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे बनाता है. और उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपका ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन आप कर पाओगे यहाँ पे, एंड यू आर मोर एबल टू एब्जॉर्ब मिनरल्स ओवर हियर. सो यू विल फाइंड more water absorption and more mineral absorption. यहाँ पे आपका हो पाएगा. more water and mineral absorption आप यहाँ पे कर पाते हो. क्यों कर पा रहे हो आप यहाँ पे? because of your high amount of your like because of presence of the fungus over there. फंगस आपके यहाँ पे लगा हुआ है आपके रूट्स के साथ. that association is called mycorrhiza. और इसके से आपका ज्यादा यहाँ पे पानी भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है एंड मिनरल्स भी आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं. ठीक है. that's a sequoia plant in front of you. Now these are all the traits we have seen this thing. ये सारे traits हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, so you don't have to go through this separately. These are all the traits we have discussed right now. तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है. Just give me a minute class. Just give me a minute over here. Just give me 1 second. Yeah. Yeah, class. Yeah. All right. So now let me just come back over here. Right. Okay. So you will find in this you have stems are going to be unbranched over here, right? Or branch. So I think we have discussed this thing. Pinus and citrus can you will have the stems are going to be branched over here. Stems unbranched आपको cycles में आपको मिलेंगे यहाँ पे. Leaves can be simple and compound. You can find them in the trees, right? They're well adapted to withstand extreme temperature, humidity, and wind. Something you know that. Cycas can have a pinnately leaves. Pinnate leaves आपको मिलता है आपके cycas के अंदर. In conifers, you will have a pinus and citrus. यहाँ पे the needle-like leaves reduce the surface area. Needle-like leaves आपके यहाँ पे surface area reduce करते हैं. Their thick cuticle succumbs stomata helps to reduce the water loss. Something we have discussed all those things. Gymnosperms are my heterosporous. Gymnosperm आप ले लो या अगर आप angiosperm अगर आप यहाँ पे ले लोगे, both of them are going to be heterosporous in nature. They produce your microspores and megaspores. Someone has a question. अमृत सर बताइए बेटा क्या सवाल है आपका? स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? Correct. Okay. Some leaves are modified into sporophylls and that compactly spirally arrange along the axis to form the lax, strobili or cones. Yeah, you can ask a question if you have any question. You have just raised your hand. These are the leaves of the cycas. Okay. Now let's have a look over here. यहाँ पे आपके सामने दो चीज आपको दिख रही है. यहाँ पे you have a ये pinus tree है and pinus tree के context में हम यहाँ पे दो चीज देख सकते हैं. You can have a male strobili and you can have a female strobili. You'll have a male and female strobili आपको यहाँ पे मिलेगा. Now let's try to understand कि आपके यहाँ पे reproduction आपके यहाँ पे कैसा हो रहा है. Let's try to see what is happening in the reproduction में अंदर आपके यहाँ पे क्या होता है आपके यहाँ पे मिलेगा. Let's try to see that thing. See, अब यहाँ पे जो चीज आपको बताऊंगा उसके ऊपर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना. See, what you find ना that you have something like my male strobili. अब मेल स्ट्रोबिली आपका बना यहाँ पे कैसे? Because of the some leaves having the macrosporangia. तो आपके जिन लीव्स के ऊपर आपको माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ होता है, we call them as a male strobili. उनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a male strobili. All right, MSA has raised their hand. हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका? Or you're just raising your hand for the sake of raising your hand. Okay, now pay attention over here. So you have this male strobili in this, and male strobili will be having something called as my microsporangia. इसमें आपको मिलेगा आपका यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया. नाउ जस्ट पे अटेंशन ओवर देयर. माइक्रोस्पोरेंजिया जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, द माइक्रोस्पोरेंजिया विल बी हैविंग ऑल माय डिप्लॉयड सेल्स. सारे सेल्स जो आपको मिलेंगे इसके अंदर, दे आर ऑल माय डिप्लॉयड सेल्स इन दिस, राइट?
नाउ व्हाट डू गेट टू सी ओवर हियर दैट यू हैव डिप्लॉयड सेल्स. अब ये डिप्लॉयड सेल्स आपके करते क्या है यहाँ पे, व्हाट दिस डिप्लॉयड सेल्स आर गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर. इन सेल्स का इस्तेमाल करके आप बनाओगे अपना यहाँ पे पोलन ग्रेन. पीपल पे अटेंशन, वी आर ट्राइंग टू मेक पोलन ग्रेन फॉर जिम्नोस्पर्म. अगर आप ध्यान दोगे तो पोलन ग्रेन जल्दी बन जाएगा. पे अटेंशन. सो हैव अ मैक्रोस्पोरेंजिया व्हिच विल हैव ऑल द डिप्लॉयड सेल्स. तो इसमें क्या होगा, वन ऑफ द सेल इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैक्रोस्पोर मदर सेल. तो कई सारे सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल आपके होंगे, अगर 100 है तो 4 सेल गिन लो. दे विल बिहेव लाइक अ मैक्रोस्पोर मदर सेल. वी विल कॉल देम एज अ मैक्रोस्पोर मदर सेल. Now, when I talk about macrospore mother cell, so that's a diploid cell यहाँ पे, that's a diploid cell. अब यहाँ पे होता क्या है? Imagine करो that you have one diploid cell over here in front of you, and this diploid cell which you have will undergo meiosis. ये करेगा आपके यहाँ पे meiosis. So macrospore mother cell is a cell which will undergo the meiosis over here, and once it undergoes meiosis, it will give rise to your 4 haploid spores. It will give rise to your 4 haploid spores. जो 4 haploid spores आपके सामने यहाँ पे आपको बन के यहाँ पे दिख रहे हैं, these 4 haploid spores are called as my macrospores. तो मियोसिस करके मैंने यहाँ पे मैक्रोस्पोर बना दिए, और इन्हीं मैक्रोस्पोर को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे. दिस मैक्रोस्पोर्स व्हिच हैव बीन फॉर्म, दे विल देमसेल्फ विल कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू योर पर्टिकुलर पोलन ग्रेन. सो दे आर द वन व्हिच विल कन्वर्ट इनटू योर पोलन ग्रेन. राइट, सो दे आर द वन. 4 मैक्रोस्पोर मेरे 4 पोलन ग्रेन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे. राइट, सो दे विल हैव सम चेंजेस हैपनिंग इन देम, and because of the changes over there, they will turn into the pollen grain. So you'll have this 4 macrospore turning into my 4 pollen grains. They will turn into my 4 pollen grains. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. This is one thing you have to do. So 4 pollen grains have been formed over here. अब जैसे आपके 4 pollen grain आपके यहाँ पे बन गए, आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया. So यहाँ पे आपका macrospore जैसे आपके यहाँ पे खत्म हो गया. And the pollen grain which have been formed, they are also called as my male gametophyte. तो अगर आपसे कोई पूछा है कि pollen grain क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, then you can also tell them pollen grain are nothing but my male gametophyte. You can also call them as a male gametophyte. Let me write over here. You can also call them as a male gametophyte. ये आता है सवाल, इसलिए याद रख लो. ये काफी छोटी चीजें हैं, बट यू शुड नो दिस थिंग्स. कि मेल स्ट्रोबिली में you'll have a मैक्रोस्पोरेंजिया, बहुत सारी डिप्लॉयड सेल्स आपके यहाँ पे, उनमें से 1-2-4 सेल्स होते हैं, उनसे एक बट 2-4 सेल आपके होंगे. दे विल अंडरगो मियोसिस. सो यू नो दैट जब आप मियोसिस अपना यहाँ पे कंप्लीट करते हो, you get to have your 4 haploid spores are formed, which are called by macrospores, and these macrospores will give rise to my male gametophyte, जिसको हम even बोलते हैं simple language as a pollen grain. This is what you find happening in them. Similarly, you have to make my female gametophyte as well. हमने यहाँ पे मेल बना लिया gametophyte यहाँ पे. Similarly, हम यहाँ पे हमारा female gametophyte भी हम बना लेंगे यहाँ पे. So now you are having the female strobili. You are having the female स्ट्रोबिली, और जिसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ ओव्यूलेट. इसको हम इवन कहते हैं एज अ ओव्यूलेट. सो फीमेल स्ट्रोबिली आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर इवन हम ऐसे बोल सकते हैं एज अ ओव्यूलेट. दिखा दो एक बार फिर आपको आपस से इसके अंदर. देखो आप यहाँ देख पा रहे हो ना, यू हैव दिस फीमेल स्ट्रोबिली, और व्हाट यू कॉल इज अ फीमेल ओव्यूलेट. यू कैन कॉल इट एज अ राइट. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, फीमेल स्ट्रोबिली और ओव्यूलेट के अंदर आपको यहाँ पे क्या होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा. सो दिस फीमेल स्ट्रोबिली और फीमेल ओव्यूलेट विल बी हैविंग समथिंग कॉल्ड एज माय megasporangium. This will have something called as my megasporangium. तो इसके अंदर आपको मेगास्पोरेंजियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा. नाउ मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू योर ओव्यूल. मेगास्पोरेंजियम मतलब आपका ओव्यूल यहाँ पे. ठीक है, सो याद रखना, द फीमेल स्ट्रोबिली विल हैव द मेगास्पोरेंजियम एंड दैट इज इक्वल टू योर ओव्यूल. सो बेसिकली ओव्यूल को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ मेगास्पोरेंजियम. अब मैं आपको पहले तो यहाँ पे बताऊंगा डायरेक्टली कुछ चीज बना के, देन बताऊंगा इसमें चीजें आपकी बन कैसे रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू वन थिंग, कि जब आप ऑब्जर्व करते हो ना जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल को, सो अज्यूम दैट दिस इज अ ओव्यूल. दिस इज माय ओव्यूल. तो ओव्यूल में आपको क्या मिलता है, ओव्यूल के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट. ओव्यूल के अंदर यू विल गेट टू फाइंड योर फीमेल गैमेटोफाइट इज बीन ऑब्जर्व. सो ओव्यूल के अंदर आपको देता है आपका बड़ा सा फीमेल गैमेटोफाइट. तो ये है मेरा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट. राइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा. तो फीमेल गैमेटोफाइट विल बी हैविंग
समथिंग कॉल्ड एज माय आर्चिगोनिया। कितने होते हैं? 2 से 3 होते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे आर्चिगोनिया। सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो, दैट फीमेल गैमेटोफाइट विल हैव प्रेजेंस ऑफ समथिंग, व्हाट डू कॉल इट एज अ आर्चिगोनिया। कितने आर्चिगोनिया आपको मिलेंगे यहाँ पे? 2 से 3। राइट, सो यू हैव आर्चिगोनिया व्हिच विल बी 2 to 3 नंबर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। एंड देन विद इन द आर्चिगोनिया यू विल हैव समथिंग लाइक योर एग। सो आर्चिगोनिया के अंदर आपको यहाँ पे एग मिल जाएगा। सो विद इन द आर्चिगोनिया यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ एग। सब में भी होता है बट एक के अंदर आपको यहाँ पे एग मिल जाएगा। एग इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सब कुछ यहाँ पे हैप्लॉइड ही है। सो लेट नॉट मेंशन दैट। आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट एवरीथिंग विल बी हैप्लॉइड ओवर हियर। हम देखते हैं कैसा होता है, कैसे ये बनता है हम देखते हैं, बट याद रखते हैं ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे। सो यू हैव अ फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर आपको मिलेगा आपका आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया 2 से 3 नंबर में आपको मिलेंगे यहाँ पे। और आर्चिगोनिया के अंदर यू विल हैव द एग, एंड along with that you will also have a presence of something called as my endosperm। इसके साथ साथ आपके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर you will also have a presence of something known as my endosperm। तो इसमें तो आपको काफी कुछ यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे सिर्फ आपको पोलन ग्रेन था, बट हियर यू आर फाइंडिंग नंबर ऑफ थिंग्स आर सीन ओवर देयर। सो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको बहुत चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। यू हैव एग, यू हैव आर्चिगोनिया, यू हैव एंडोस्पर्म, एवरीथिंग इज बीन सीन ओवर देयर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दीज आर गेटिंग फॉर्म्ड। ये तो हमने देख लिया कि ये सब आपका इसके अंदर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनको बनाते कैसे हो आप, लाइक हाउ एक्चुअली यू मेक सच अ स्ट्रक्चर ओवर हियर। तो assume that you have an ovule. Now let's pay attention over here. Assume that you have this ovule in front of you. So you have your ovule, and ovule के अंदर you have some kind of cell. So ovule के अंदर क्या होता है? You will have a certain type of cells you will find in the ovule. So ovule के अंदर you will have some group of cells over there will be seen in this. So कई सारे cells आपको ovule के अंदर मिलते हैं. These cells are called as cells of nucellus. इनको हम बोलते हैं cells of nucellus. So nucellus के cells आपको मिलते हैं आपके ovule के अंदर. Now within the cells, within the ovule, what will happen ना? You will have one special kind of cell आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारे डिप्लॉइड सेल हैं, उनमें से एक आपका सेल आपको मिलेगा यहाँ पे, वो भी आपका डिप्लॉइड होगा। एंड दैट डिप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज माय मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, राइट। सो यू हैव दिस डिप्लॉइड सेल इन द सेंटर, दैट डिप्लॉइड सेल इन द सेंटर इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल, आपको मिलेगा यहाँ पे। Now when you focus on this megaspore mother cell over here, जब आप megaspore mother cell का आप यहाँ पे ये तो आपका डिप्लॉइड सेल है। अब ये करेगा क्या आपका यहाँ पे? One diploid cell that is called as my megaspore mother cell will undergo meiosis. So जो एक लोता सेल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, which is my megaspore mother cell, this will undergo meiosis. ये करेगा meiosis, और meiosis करने के बाद आपको 4 सेल बना के देगा। तो this will undergo meiosis and will give rise to my 4 cells. ये तो आप जानते हो कि 4 सेल बनते हैं meiosis बनने के करने के बाद। So you'll have your 4 megaspore will be formed. 4 आपके मेगास्पोर आपके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपके माइक्रोस्पोर यहाँ पे रेडी हो रहे थे, सिमिलरली आपके यहाँ पे मेगास्पोर आपके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। सो you'll find your 4 megaspore are ready over here. These are my megaspores. अब यहाँ से याद रखता है, यहाँ से थोड़ी स्टोरी आपके यहाँ पे अलग हो जाती है। अलग क्या होता है यहाँ पे? जब आपके 4 मेगास्पोर यहाँ पे बने, चारों के चारों आपके यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे। नॉट ऑल 4 of them are going to survive. Out of this 4, 3 of them will die. Out of this 4 you will find 3 of them will degenerate. इन चारों में से 3 यहाँ पे हो जाएंगे आपके डीजेनरेट, और एक आपका यहाँ पे सर्वाइव करेगा। सो 3 of them are going to die and 1 is going to survive. और जो यहाँ पे आपका सर्वाइव कर गया, the one which is going to survive will give rise to the female gametophyte. जो आपका यहाँ पे सर्वाइव करता है, this will undergo mitosis. This will undergo mitosis, और mitosis कर करके ये आपको सब कुछ बना के देगा। Now this is the cell which will undergo mitosis and will ultimately give rise to all the things. It will make the female gametophyte. It will make your archegonia. It is going to make your egg cell, जो आपको आर्चिगोनिया के अंदर आपको मिल जाएगा, and it will also give you the formation of my endosperm. तो जो भी हमने यहाँ पे बना के रखा था,
वॉट एवर वी हैव फॉर्म्ड ओवर हियर, ये भी जो भी हमने यहाँ पे बड़ा सा पिक्चर यहाँ पे बना के रखा था, ये सारी चीजें बना के आपको कौन दे रहा है? आपको यहाँ पे मेगास्पोर। अ फंक्शनल सिंगल मेगास्पोर विल गिव राइज टू एवरीथिंग। एंड यू शुड नो दैट जो भी आपके यहाँ पे बन रहा है, वेदर इट्स माय फीमेल गैडोफाइट, आर्चिगोनिया, एग, एंडोस्पर्म, जो भी आपके सामने यहाँ पे बन के आपको मिल रहा है, एवरीथिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय हैप्लॉइड। सारे के सारा स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे होगा ना, सारा हैप्लॉइड होगा। कोई भी आपको स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट? So this is one thing you have to know. All the structure which I'll be forming over here is going to be haploid in nature. ठीक है? And मतलब haploid. अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी है हमेशा यहाँ पे, कि एंडोस्पर्म आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर पहले ही बन जाता है, इवन विदाउट अ फर्टिलाइजेशन इट इज गेटिंग फॉर्म। क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो होता है ना एंडोस्पर्म, वो आपका ट्रिप्लॉइड होता है। यू विल सी दैट इन फ्यूचर, बट याद रखना एंडोस्पर्म जो आपका बन रहा है आपका यहाँ पे, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द एंडोस्पर्म, पहली बात एंडोस्पर्म का काम यहाँ पे क्या होता है? इट इज गोइंग टू प्ले द रोल इन द नरिशमेंट ऑफ द embryo. It will help in the nourishment of the embryo. So nourishment of embryo will be happening because of the endosperm. So endosperm जो आपका होता है वो नरिश करता है एम्ब्रियो को। ये एंडोस्पर्म कैसा होगा? इट विल बी माय हैप्लॉइड नेचर में ये होगा। एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड नहीं होता। एंजियोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म आपका यहाँ पे होगा ट्रिप्लॉइड। सो एंजियोस्पर्म के अंदर द एंडोस्पर्म इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड इन नेचर, राइट? एक और बात आप यहाँ पे याद रखनी है आपको यहाँ पे, वन मोर वेरी थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, दैट यू विल फाइंड कि देखो आपके यहाँ पे बन गया, यू हैव अ एग ओवर हियर, ये एग के साथ ही मेरा स्पर्म आके फ्यूज करेगा। सो बेसिकली मेरा मेल गैमेट जब आएगा, इट विल फ्यूज विद द एग ओवर हियर। सो नाउ यू शुड नो दैट, assume that there is a male gamete, this is my male gamete over here, haploid male gamete, it will fuse with the egg, right? So you have a male gamete जो आपका हवा के साथ आ चुका है आपके ओव्यूल तक, this is something will fuse with the egg over here, and this will give rise to your zygote, right? This will give rise to your zygote over here. और ये zygote फिर आपका ग्रो करता है, this is a diploid zygote with embryo, this will ultimately grow into your embryo over here. आपको याद यहाँ पे रखना है कि आपका जो एम्ब्रियो आपके यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? सो इसको जो खाने का सप्लाई मिलता है वहां पे, दैट इज कमिंग फ्रॉम द एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म इज अ टिश्यू व्हिच विल एक्चुअली एंश्योर दैट द नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड टू द zygote and the embryo so that they can grow happily and easily over there. This is one thing you have to know in this. These are the things you have to be very clear with when it comes to my gymnosperms. इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, राइट? अब जो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, you have already seen all those things. So these are the statements of the NCERT. ये सारी आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स, एक बार अगर आप एनसीईआरटी देख जाते हो, आपको ये सारी चीजें आपको याद आ जाएगी. वॉट एवर हैव मेंशनड ओवर यू ओवर हियर टू यू ओवर हियर, दैट इज समथिंग विल बी सीन ओवर इन दिस, राइट? जैसे आप देख सकते हो, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस meiosis to give rise to my 4 megaspores. One of the megaspore enclosed within the megasporangium, that's your ovule, develops into a मल्टीसेलुलर फीमेल गैडोफाइट. तो एक जो मेगास्पोर आपको बनता है यहाँ पे, वो आपको पूरा मल्टीसेलुलर फीमेल गैडोफाइट बना के देगा. दैट बेयर्स 2 or more आर्चिगोनिया. द मल्टीसेलुलर फीमेल गैडोफाइट इज आल्सो रिटेन विद द मेगास्पोरेंजियम, दैट्स योर ओव्यूल. मेगास्पोरेंजियम जब भी टर्म आएगा आपके दिमाग में, आप ले आउट टर्म एज अ ओव्यूल. ओके. The male and female cones may be born on the same tree or on a different tree, that depends. Unlike bryophyte and pteridophyta, in gymnosperm, male and female gametophyte do not have independent free living existence. मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर आपको independent free living existence आपको यहाँ पे नहीं मिलता. They remain within the sporangia, retain in the sporophyte. अब एक काम करते हैं, ये सब तो you can have a look at them later. Let's solve some questions. कुछ सवाल यहाँ पे आप करके बता दो मुझे यहाँ पे. So raise your hand to answer this. You can answer in the chat. Which of the following is a living fossil? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे लिविंग फॉसिल आपके यहाँ पे हो जाएगा? Which of the following is my living fossil? लुधियाना का यहाँ पे आंसर आ चुका है, and that's your cycas. That's a true answer. Cycas is an example of my living fossil because it has some traits जो अभी भी आपको दिख रहे हैं, जो पहले भी आपको मिल जाते हैं. True. ये बताओ, which of the following is not common between Funaria and Selaginella? Funaria और Selaginella के अंदर इनमें से कौन सी चीज कॉमन नहीं होती? ऑप्शन ए है. कोई कह रहा ऑप्शन ए यहाँ पे. बेटा ऑप्शन ए गलत है. दोनों के अंदर आर्चिगोनियम होता है. Funaria is a bryophyta, Selaginella is a pteridophyta, and both of them will have the archigonia.
तो किसी ने ए किया तो आप भी ए मत करो, इज द रॉन्ग आंसर। सोचो थोड़ा सा। सी, बेटा सी भी आपका गलत आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज फोनेरिया इज अ ब्रायोफाइट दैट विल हैव द मेल गैमेट्स, विल हैव द फ्लैजेला, पानी में ही जाएगा ना स्विम करके। एंड सेलेजिनेला भी आपके यहाँ पे टेडोफाइटा जो होता है, इट विल आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, व्हिच इटसेल्फ मींस दैट इट विल आल्सो हैव अ फ्लैजेला इन देम। तो सी भी आपका हट गया, आधे आंसर तो मैंने यहाँ पे हटा दिया आपके लिए। योर ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। याद रखना, सेलेजिनेला इज अ टेडोफाइटा, इट विल हैव द रूट्स, इसके अंदर आपको रूट्स मिलेंगे। Poneria is a bryophyte, यहाँ पे आपको सिर्फ मिलता है आपके rhizoids. So yes, ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। Now tell me over here, where a plant having seed but lacking flower and fruit belongs to? एक प्लांट जिसके पास सीड्स है बट फ्लावर एंड फ्रूट्स आपको यहाँ पे नहीं मिल जाए, ये किसको बिलोंग करेगा? राइट, नाउ दैट इज द करेक्ट आंसर, इट विल बिलोंग टू माय जिम्नोस्पर्म्स। बिल्कुल सही, ठीक है। ये भी बता दो, विच वन इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू? इनमें से कौन सा प्लांट आपका ज्यादा एडवांस है एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में? राइट, लुधियाना अमृतसर, दैट्स अ करेक्ट आंसर। पाइनस, पाइनस इज अ मच मोर एडवांस वन, ज्यादा एडवांस है आपका ये कंपेयर टू बाकी ग्रुप्स के कंपेयर में। इट्स अ जिम्नोस्पर्म एंड इट इज अ मच मोर एडवांस वन। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ट्रू। देन टेल मी, हाँ, पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म आपका कैसा होता है? हाउ डज द एंडोस्पर्म इज गोइंग टू बी इन दिस काइंड ऑफ प्लांट्स? वेरी गुड अमृतसर, बहुत तेजी से आपने आंसर कर दिया, अल्ट्रा तेजी से आपने आंसर कर दिया, वेरी गुड। एंड यस, you will find the endosperm in cycas and pinus is always going to be my haploid। अरे क्यों कर रहे हो ऑप्शन ए यहाँ पे? आपको बताया ना मैंने कि आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म आपके यहाँ पे हैप्लॉइड होगा। आपके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर वो ट्रिप्लॉइड होता है, आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय हैप्लॉइड इन नेचर, राइट? ये करके बता दो मुझे यहाँ पे। इन पाइनस द पोलन ग्रेन आर हैविंग 6 क्रोमोसोम्स, देन उसके एंडोस्पर्म में आपको कितने मिलेंगे? एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे कर दो। इन द पाइनस द पोलन ग्रेन आर हैविंग 6 क्रोमोसोम, देन उसके एंडोस्पर्म में आपको यहाँ पे कितने मिल जाएंगे? क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? ए आ रहा है यहाँ पे आंसर। बेटा मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुझे इतना बताओ कि पोलन ग्रेन आपका हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है? पोलन ग्रेन आपका हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, पहले इतना बता दो मुझे चैट के अंदर। पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? बेटा हैप्लॉइड होगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ना, बनाई था आपके माइक्रोस्पोर वर्ड में हैप्लॉइड ओनली, सो पोलन ग्रेन मेरा उसमें से बन रहा है। सो पोलन ग्रेन आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। अगर पोलन ग्रेन में आपको कहा जा रहा है इट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके 6 है, देन आप तो आंखें बंद करके कह सकते हो ना फिर तो कि एंडोस्पर्म मेरा आप पे 6 ही हो गया। पोलन ग्रेन अगर आपका हैप्लॉइड है यहाँ पे, यू नो दैट एंडोस्पर्म इज आल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड ओनली, एंडोस्पर्म भी आपके यहाँ पे हैप्लॉइड ही होता है, सो दैट इज व्हाई 6 विल बिकम अ करेक्ट आंसर इन दिस। ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है? ऑलराइट, सो देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चन बट वी कैन हैव अ लुक एट देम लेटर। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आपका, क्योंकि यहाँ पे टाइम रैप अप हो चुका है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। यहाँ पे आपका जिम्नोस्पर्म आपका यहाँ पे खत्म होता है एंड प्रीडोमिनेटली आपका चैप्टर भी एक तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंजियोस्पर्म को हम यहाँ पे डिटेल में नहीं सीखते बिकॉज इट इज अ चैप्टर व्हिच आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ योर 12th ग्रेड डिटेल में, सो यू कैन एक्चुअली फोकस देयर द एंजियोस्पर्म्स। ऑलराइट, सो लेट्स रैप दिस अप नाउ। इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई सवाल नहीं है then that's it, we'll catch you again in the next class. So yeah, bye everyone, bye.